It's your poker guy and I am back आज एक और podcast के साथ and today we have someone unique, not someone who plays poker but someone who poker को अपने लिए खेलने लायक बनाते हैं. We have Rachna Shroff. She's a lawyer from the gaming and technology industry. तो काफी interesting piece है. We'll get to know a lot about that. She's a gold medalist in an MBA. She is faculty at Art of Living. तो वो भी काफी सही है. So she's got mindset also sorted. And she's also a mentor. तो अगर आप एक lawyer बनना चाहते हो या फिर अगर आप एक young lawyer हो जो भी कर रहे हो, तो she also mentors all lawyers. So super excited and happy to connect with Rachna. And यार बहुत ज्यादा बर्निंग क्वेश्चन है रचना, जो सब लोग कॉन्स्टेंटली पूछ रहे थे रिसेंटली जब से वो SROs एंड MEITY का आया कि पोकर का क्या हो रहा है. सो यू वांट टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड डूइंग दिस. Thank you, Pat, for having me, and thank you for that wonderful introduction. So please go ahead. I'm looking forward to answer all of that. Okay, we'll discuss the entire MET this thing and we'll do all of that. अगर अपन first ही चालू कर दे, okay, is how is the gaming industry in India at the moment? How do you see? You're a lawyer in the gaming industry. So okay, we can just start with how did you get into the gaming industry first? And you told me you're not a gamer. आप gamer नहीं हो. So how did you get into gaming? And then how do you see the industry today? Okay. So पहले प्रश्न का अगर मैं जवाब दूं तो कि how did I get into this industry? Was it happened to me. Okay. And I said it. I would say I would combine both the questions, and I would say that this is the most beautiful, wonderful, amazing period for the gaming industry because हम इस इंडस्ट्री के लिए बहुत समय से कोशिश कर रहे थे कि इसको एक सेंट्रल पीस ऑफ लेजिस्लेशन के अंडर रिकॉग्नाइज किया जाए, जो कि फाइनली हो गया है. और एक सेंट्रल पीस ऑफ लेजिस्लेशन से रिकॉग्निशन मिलने से यू नो दैट इट इज लेजिट. ये केवल इस इंडस्ट्री के लिए नहीं पर पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है. इससे क्या होगा, हम बहुत सारे बाहर के इन्वेस्टर्स भी आराम से आ सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप लीगल हो, राइट? यहाँ इंडिया में बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस और रेवेन्यू जनरेट होगी. और ये तो भी पता ही है कि इंडिया का जो यूथ है वो सबसे ज्यादा है इन क्वांटिटी, और वो ही गेमिंग में भी है. सो इतने बड़े इंडस्ट्री को रिकॉग्निशन देना, हाँ, इसका मतलब आप सारे दरवाजे खोल रहे हो, एंड दैट विल लीड टू मेकिंग इंडिया दैट $1 trillion digital economy that we are looking at. So that is why I would say that, you know, this is the position of gaming industry. हम already एक $2 billion industry हैं, and we are aiming at looking at $5 million in the next 2-3 years, which is not a small deal. Yeah, it's huge. That is why I'm saying that gaming is the place to be. Whether you are a lawyer, or whether you are a web designer, whether you are a marketing agency, or whether you know are into a content creator or a content creator, मतलब कुछ भी आप डिजिटल कर रहे हो तो आपको गेमिंग के तरफ जरूर देखना चाहिए. Wow. और मेरे लिए तो it happened by chance, and I think I have found my passion, I found my niche, and this is one area that I'm going to continue being an expert in. So I'll just love gaming. Yeah. Wow, Miko, आपके introduction में I should have added this also कि I just spoke to you 10 minutes before we started recording this. So the passion also जो आपका gaming की तरफ है is amazing, and I think first answer में everyone can see that you are really pro the industry. So that is awesome. And जो point आपने कहा कि also a lot of foreign money will start coming into the industry, ये एक point है जो काफी लोगों ने सोचा नहीं होगा इसके बारे में. Because as gamers, what we are thinking is कि अच्छा अब मेरे तो टैक्स लगने वाला है, मेरा ये होने वाला है. But how is the industry going to benefit is now VCs जो होते हैं, जो foreign होते हैं, जो invest करते हैं, they will also start putting in money कि अच्छा चल I trust this brand, अभी ये तो अभी legal हो गया है, चलो मैं डाल देता हूँ कि यार फंडिंग करता हूँ, more jobs, more everything for that. Correct. तो ये बहुत जरूरी था कि हमें ये जो लीगल सैंक्शन की जरूरत थी, इसके वजह से कंपनीज अगर अपने आप को पिच भी कर रही थी तो वो एक हिंड्रेंस बन रहा था, जो कि अब एक हिंड्रेंस हट गया है. तो दिस इज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर प्लेयर्स एंड द इंडस्ट्रीज टू रिजॉइस. चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि आप ये समझिए कि और ट्रांसपेरेंसी आ गई है और लीगैलिटी आ गई है और ट्रस्ट बढ़ेगा ऑपरेटर्स और प्लेयर्स के बीच में. ओके, ऑसम. सो when we do this, अभी जब ये आया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का the ruling, so it said that
जो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था सबसे पहले सुन के, एंड इट सेड दैट व्हाट वी विल डू इज, इट नेवर मेंशन्ड एनीथिंग के स्किल के बारे में कुछ बात नहीं थी, जजमेंट के ऊपर बात के ये सब के ऊपर कोई टॉपिक नहीं था. व्हाट दैट थिंग सेड वाज दैट अगर आपने, इफ यू आर इन्वॉल्व इन बेटिंग और वेजरिंग, तो फिर जो बॉडीज हम लोग बनाएंगे एसआरओस करके, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस आई बिलीव, उनके पास ऑर्डर होगा कि आधे अलाउइंग इट और नॉट अलाउइंग इट, परमिसिबल है कि नहीं है. और अगर बेटिंग हो रही है कोई भी लेवल की, या आउटकम जो प्रिडिक्टेबल आउटकम है उसके ऊपर बेटिंग हो रही है, तो उनके हाथ में, वो लोग को अगर जब कॉमन आदमी देखेगा तो वो यही सोचेगा कि अरे यार, मतलब some level of betting is happening in poker also, in rummy also, because outcome is uncertain, right, which is happening in everything in life actually, but still. तो ये जब आप कर रहे हो तो पोकर और रमी का तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, मुझे भी हो गया. बट देन आई सॉ ऑल पोकर कंपनी का फाउंडर्स, ऑल रमी कंपनी का फाउंडर्स सेइंग अरे ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, एंड वी आर ऑल कंफ्यूज्ड. एंड आई गॉट CNN articles of people saying के 2 minute 26 seconds के बाद देखो he is saying के ये अगर ये है तो परमिसिबल नहीं होगा. तो मैंने आपको भी पूछा था लिंक्डइन पे. सो इफ यू कैन प्लीज इलैबोरेट कि क्या मतलब है उस रूलिंग का, और क्यों आपने कहा कि पोकर रमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एंड फैंटेसी क्रिकेट को. या इफ यू कैन जस्ट से दैट. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, बिकॉज ये प्लीज पहले समझ लीजिए कि पोकर और रमी जो है आज वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे बेस्ड है, एंड दे आर गेम ऑफ स्किल. ठीक है, उसी की वजह से इंडस्ट्री अभी तक थ्राइव कर रही है, जबकि हमें पता है कि बहुत सारे लास्ट 2-3 सालों में बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आए, ऑर्डिनेंसेस आए, जिससे इसको बैन करने की कोशिश की गई थी. पर ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसकी वजह से ये गेम्स चल रहे हैं. और अब जब मीटी ने कहा कि ये लॉज है, ये रूल्स है, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज होंगी या ऑर्गेनाइजेशन होंगी, वो ये गेम को जांचेंगे, मतलब वेरीफाई करेंगे. तो ऑपरेटर्स को बताना पड़ेगा, ये मेरा अजम्पशन है कि ये मैकेनिज्म ऐसा होगा कि ऑपरेटर्स को बताना पड़ेगा कि इस गेम के पीछे ऑपरेशंस क्या है, ये गेम्स कैसे चलती हैं. और जब वो बताएंगी तो एसआरओस देखेंगी कि भाई इसमें कहीं भी वेजरिंग या बेटिंग का सवाल तो नहीं आ रहा है ना. और ये माइंडसेट की बात है कि आपको ये समझना पड़ेगा, पोकर और रमी गेमिंग है, गैम्बलिंग नहीं है. करेक्ट. राइट. और जब हम गेमिंग बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है कि आप अपने एनालिसिस के बेसिस पे जीत रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जीत रहे हैं, आप अपनी ट्रेनिंग के बेसिस पे जीत रहे हैं. आप जो प्रो के बारे में बात करते हो, इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हैं, इतने ज्यादा पैसे जीतते हैं, क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है, वो कोच रखते हैं. आई हैव मेट अ कपल ऑफ प्रोज. Yeah, I know that they have won the international level of games in poker. So I know कि वो कितनी कोचिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वो अपने माइंडसेट पे वर्क करते हैं, अपने स्किल्स पे वर्क करते हैं, मैथ पे हर दिन वो कितने घंटे बिताते हैं. Correct. तो आपको ये समझना होगा कि ये गेमिंग की कैटेगरी में आता है और ना ही गैम्बलिंग. तो मीठी ने कहा है कि कहीं भी जहां आउटकम वेजरिंग होगा, wherever there is wagering found, then it is supposed to be banned. But gaming is not an outcome of wagering. There is no wagering there. If you are even putting in money and you are winning, because you are winning on the basis of your skill, that is why it is known as a game of skill and not of chance. And that is why it is gaming and not gambling or sports betting. तो ये जो मीटी ने ये जो गाइडलाइंस लाए, इसकी वजह से सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये हुई है कि गेमिंग और गैम्बलिंग, गेमिंग और स्पोर्ट्स बेटिंग में क्लियर डिस्टिंक्शन आ गया है. Got it, got it. अगर हमें बस इतना समझना है कि कब गेमिंग को, किस प्रकार के गेम को आप गेमिंग बोलेंगे, उसको गेम ऑफ स्किल बोलेंगे, और कौन सी गेम्स ऐसे हैं जो चांस है या स्पोर्ट्स बेटिंग है या उनमें वेजरिंग है. इसलिए मैंने कहा कि पोकर और रमी की तो आप चिंता ही मत करो, वो तो एकदम सेफ जोन में है. अंडरस्टूड. सो सुपरसीड कर दिया है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसने सुपरसीड करके ऑलरेडी पोकर, रमी एंड फैंटेसी को क्लासिफाइड इनटू द गेमिंग सेक्टर, while things like these are all in the gambling side of things or sports betting side of things, and उनके ऊपर भी अगर allow करना है तो it's something which the SRO will decide or not decide कि ये part of this thing will be there or not there. So I think there's
हाँ ये बहुत क्लियर है कि एसआरओज गैम्बलिंग अलाउ करेंगी ही नहीं, क्योंकि मीठी ने क्लियरली बोल दिया कि जिसका भी आउटकम वेजरिंग होगा हाँ, वो ऑफ कोर्स अलाउड नहीं है, देयर इज अ कंप्लीट बैन ऑन दैट। और दूसरा, सुपरसीड नहीं किया है, इट इज इन सिंक विद व्हाट द it is जजमेंट्स हैव सेड। ओके या ओके ओके, फेयर या इनफ, गॉट इट, नाइस। तो अभी मुझे ये आप बताइए, सो दिस इज क्लियर, वी गॉट दिस। What has been this entire mess for so many years? Why has it been like this? Why is it like, because there was no central legislation? What was the reason कि आज तक इतना, because it's been so many years for the poker and rummy industry, तो इतना या clarity कभी था क्यों नहीं पहले? Oh, I would say that the industry has been really working hard for the last 7, 8 years to get to what we are today. Got it. And I would say that every year I've worked in this industry for 5 years, and I tell you, every year we have been making progress. This industry is to be highly respected. मुझे इस industry से इतनी इतना what should I say, I'm passionate about it. Why? Because I have seen it working so hard to get this recognition. कहीं भी कुछ भी, जब कोई भी स्टेट अगर नहीं समझा या कोई ऐसी पॉलिसी पेपर आई जिसमें इस इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिला, तो ये इंडस्ट्री ने बहुत काम किया है by different self-regulatory mechanisms, by making compliances, by making processes, procedures. आपको पता है ये जो मीठी के रूल्स आए हैं, इसमें जितने भी compliances बोले गए हैं, वो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं, वो Wow. ऑलरेडी हम फॉलो कर रहे हैं। और ये सब करने के वजह से ही आज इस इंडस्ट्री को ये जगह दी गई है। तो मैं नहीं कहूंगी कि इस इंडस्ट्री ने कुछ नहीं किया है, इस 7 साल से बहुत मेहनत कर रही है, और फाइनली उसको सूरज के दर्शन हो गए हैं। Nice. तो it's a big thing. I would not say that it has not done anything. It has been Perfect. really making moves. Yeah. What is the, I mean, this can be like, I mean, a question where, what is the role of the government been in this? Like, what do you think has the current tenure of 10 years, right, which is now pretty much from the BJP government, how has that created an impact? And again, I'm not like BJP or Congress, aisa, but I'm No, just trying to no. understand, okay, what is the impact of this government been towards enabling this day to day? Kya hai? Yeah. A very nice question, Bhat. See, it is all about having a progressive mindset. It is all about thinking about the welfare of your people as well as the economy. Yeah, Correct, that is how a country will grow. And India is supposedly to become the superpower. We are seeing how India is correct, growing at the moment, and how the neighboring countries are in what state. We're very compassionate about them, absolutely. but we can see the difference. And this progressive mindset about Make in India, about Brand India, about Digital India has contributed to the growth of this particular industry. So I would say that, of course, a progressive mindset can Got it. lead to a progressive country. And that is why this entire technology sector has risen. If you see gaming, if you see edtech, if you say fintech, if you see any kind of tech Yep. companies that have come up, they've all risen up. And we should thank our government, and we should thank the progressive mindset behind this. Yeah, I think that's a very nice point, because वो progressive word is enough to say everything, because हर एक चीज में you see it that way. It's not just Correct. staying there कि growth की तरफ काम है and progress की तरफ काम है. Absolutely. Uh, nice. What do you think is the problem of some states? Why are they so against? And again, this is not today. I'm saying from पहले से कोई states allow करे, जैसे महाराष्ट्र, suppose, because again I'm from हाँ, Maharashtra, so we've always हाँ, allowed it. yeah. क्यों कोई states को हमेशा से issue रहा है? And also इसमें कभी-कभी कुछ politically भी motivated होता है. Again, if you can answer about that, is and if you can't also, it's fine. Why do you think is the reason that sometimes some places are not allowing it? So I would say it is that difference that I spoke of earlier, that we need to understand that there is a difference between gaming and gambling. We need to understand there is a difference between gaming and sports betting. और ये confusion और बढ़ता गया जब गेमिंग इंडस्ट्री बूम कर रही है अभी लास्ट 2-3 सालों में, और इसी समय स्पोर्ट्स बेटिंग ने भी एंट्री I think करी है। sports betting तो तो always boom ही कहा है, किया है, हाँ, मतलब everyone और always wants to bet. सो स्पोर्ट्स बेटिंग जो एंट्री कर ली, तो लोगों को वो डिफरेंशिएशन फैक्टर नहीं समझ आया। तो उसके वजह से जो भी अगर कोई घटनाएं हुई हैं, या फिर
कुछ भी जो एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होने के वजह से इस इंडस्ट्री को इतना पुश बैक सहना पड़ता है, जो कि जरूरत नहीं है। अगर यहाँ एक प्रॉपर लॉ हो, जो कि सेंट्रल पीस ऑफ लॉ हो रादर देन स्टेट लॉज, और उसके थ्रू गाइड किया जाए इस इंडस्ट्री को, और समझा जाए कि डिफरेंस कहाँ है, और ये भी समझा जाए कि अगर गेमिंग को भी आप ये मानते हो कि भाई बहुत समय खेलेंगे तो हाँ हैबिट हो जाती है, बहुत समय खेलेंगे तो हो सकता है टाइम भी बहुत स्पेंड हो सकता है, मनी भी बहुत स्पेंड हो सकता है, और गेम का मतलब ही होता है कि आप जीतेंगे भी और हारेंगे भी। पर अगर आप ये नहीं समझेंगे कि ये सब मैकेनिज्म ऑलरेडी बिल्ट है इस इंडस्ट्री में, वो सारे बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी है, अगर आप वो सब इंडस्ट्री का नहीं देखेंगे तो फिर उसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि उसको इतना पुशबैक मिलता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मीटी के रूल्स आ गए हैं, और जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है इस इंडस्ट्री में, मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ हर स्टेट will भी turn around. समझ जाएगी कि इट इज इम्पोर्टेंट टू अलाउ, बिकॉज it is no more a matter of just winning and losing. People are also finding their professional careers here. Absolutely. So don't ban anything. I would say regulation is the way out. Got it. Nice, nice. I like the differentiation answer because that just बहुत गैम्बलिंग और गेमिंग के बीच में जो एंड साथ में आया है, तो वो आपका रीजनिंग वेरी नाइस. इफ आई जस्ट बिफोर आई मूव बैक टू द मीटी का जो नया चेंजेस आई वांट टू टॉक अबाउट एसआरओज एंड स्टेट लॉज प्रिवेल होगा कि नहीं एंड ऑल दोस थिंग्स. मुझे ये भी जानना है कि ऑफ कोर्स बट दीज गेमिंग लाइक दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, गेमिंग में विद दीज रियल मनी गेम्स also there is a upside and a downside, like you said. Of course it can be, the downside can be like you said, time spent ho jata hai, there's a certain level of addiction, and it's not because of these games ka fault. With anything that you do there can be this thing because money is involved. So ye sab cheeze jab hoti hai, tab how do you personally as a in the industry, how do you see that fact ki nahi, do you blame it on the game or do you blame it on the people who sometimes take wrong steps? Maybe that even if it's 2 out of in the entire year, which is again every life is important, but I'm just trying to mention that अगर कभी ऐसा होता है, how do you see it and do you put the blame on the game or who is it on, like वो गलती क्या है and वो क्या उसका, like what's your answer, reasoning for that? So Parth, it is not we have to come out of this blame game. Correct. Yeah, and we have to really work on our individual mindset. I totally believe it is an individual mindset thing. आपको, your life is so precious, right? Correct. You cannot allow it to be taken for a ride just like that. You have Correct. to take care of your well-being. You have to take care of your money. You have to take care of your time. Yeah. I'm not, what I'm going to say, it is not because I've worked with these industries, because I've seen the effort they put. If people feel that, they're not feeling great about the current situation they may be in. So I've seen that these industries put in so much of effort by bringing that responsible gaming in between. That's a policy which helps anybody to self-exclude themselves, to set their time limit, to set their money limit, और यहाँ तक कि वो अपने आप को पूरी तरह से अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं, पूरी तरह से वहां से निकलवा सकते हैं, और उसके बाद अगर उनको काउंसलिंग की भी जरूरत है तो वो कंपनीज को अप्रोच करते हैं, तो उनको काउंसलिंग भी ऑफर की जाती है. तो मुझे लगता है एक कंपनी के नाते जितना करना चाहिए कंपनीज कर रही हैं, तो ये एक इंडिविजुअल पे भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप में देखें कि कहाँ जा रही है बात. करेक्ट. और आप अपने जीवन, गेमिंग इज सपोज टू बी अ leisure activity. You do it for entertainment. You build your skills. You enjoy yourself. It has to be recreational. Even if you want to make it a career, आपको थोड़े समय का तो ब्रेक लेना ही पड़ेगा. Correct. मैंने प्रोफेशनल्स लोगों से बात की है जो कि टॉप प्लेयर्स है अभी पोकर इंडस्ट्री में, वो भी बोलते हैं कि उनका पूरा दिन गेम खेलने में नहीं जाता है. वो थोड़ा मेडिटेट करते हैं, थोड़ा अपने आप को ट्रेन करते हैं, वो सोशलाइज करते हैं, वो और भी काम करते हैं, और वो गेम भी खेलते हैं. मल्टीपल इंटरेस्ट होना जरूरी है because this is not a sole interest. Absolutely. करेक्ट.
तो वही मैं, और मुझे नहीं लगता कि ये ब्लेम गेम से सॉल्व हो सकता है. यू हैव टू, आई फील इट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन सेल्फ. Got it. And I think, yeah, again, because like, if you ask a poker player and they have to explain their profession and they're asked, "Ki, boss, you're probably taking someone else's money because if I Yeah. win, you lose. And if we're Yeah. playing it that way, it's a zero sum game." So sometimes what happens is a poker player or me as a content creator would also say, "Arey bhai, stock market में भी यही होता है." Like, if you're so that is regulated. I mean, Yeah. even in business, I'm trying to sell something to you at a higher price. You're buying it at a higher price. I Right. put a blah blah blah. The same concept happens. So you're saying these blame games and this comparison is like not applicable at all, right? Like it's more Correct. about the individual, right? Like you said. Correct. Got And it. Got it. as you said, as you took a very good comparison of the stock market. Do you know, again, it's the same thing with the gaming industry and the stock market. That people have to understand that it is not gambling or wagering. स्टॉक मार्केट के भी जो, जिसको आप बुल्स Correct. बोलते हैं, और या ट्रेडर्स बोलते हैं, इफ यू गो एंड स्पीक टू देम, आपको Yeah. पता चलेगा वो कितना स्किल्स अक्वायर करते हैं. आपको Correct. पता है वो पढ़ाई में वो 10-12 लाख रुपए साल के देते हैं. वो सीखते हैं ट्रेडिंग कैसे किया Correct. जाता है, और फिर वो मार्केट से पैसे बनाते हैं. So it is all about coaching, training, upgrading yourself, and then earning money. It is not that you are just putting money and you आप सोच रहे हो कि ओ आज तो लग जाए ये मेरा. शेयर ऊपर Correct. जाएगा और मैं Correct. पैसे जीत जाऊंगा. Yeah. Yeah. नहीं, Yeah. वैसे तो फिर आप लॉस में ही निकलोगे. आपका माइंडसेट भी अफेक्ट होगा, and it will not go down very well. Yeah. Got it. So Got it. please understand there is a huge difference in this industry of online gaming, gambling, betting, and wagering. Wow. Okay. Nice. Let's come back to the meaty rules, right? जो नए वाले आए हैं. तो ये जो Yeah. आए हैं, इसके बाद भी अभी तक I'm like from what we know, there's not much clarity. But if you can help us, Yeah. will the center का now laws prevail over say even the banned states like Orissa and all these states that exist, right? Yeah. जिन्होंने किया हुआ Yeah. है, Gujarat भी है and all of them, Andhra Pradesh, Yeah. Telangana and all. So will Correct. that happen or Correct. will the state laws yet prevail? हाँ, तो देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरसेक्शन दैट वी आर एट. हाँ. So when MEITY released these rules, it made it very clear that the state laws are completely intact as they are. Ah, Okay. okay. And yeah, and then if there is any confusion, then the MEITY will come and look into it. So now, if you want to see the first case which will come up in the scene of, we are waiting for this Tamil Nadu ban to be notified. And once it is notified, the operators are going to move the court. And here we will see a very beautiful discussion coming up, which will decide whether the state laws or whether the MEITY rules. Got it. Yeah. So ये let's पहला केस wait बन and रहा है. watch. पहला हाँ. केस बन रहा है जब अभी Correct. पता आएगा कि स्टेट प्रिवेल करेगा या मीटी का जजमेंट करेक्ट. वो प्रिवेल करेगा. करेक्ट. हाँ, तो ये बहुत अच्छा है. मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी तरह का द्वंद अच्छा है, उससे Okay. कुछ अच्छा ही आउटकम निकलता है. सो Got it. ये जो होने वाला है, लेट्स सी, वी कैन वॉच. Interesting. Nice. So that's how we will understand state laws and all. Okay. SROs पे आते हैं, right? SROs are self-regulatory bodies, and from what we've understood, they are individuals के comprised होंगे, right? These will be individuals, and 3 SROs की बात हुई है. So इसका मतलब क्या है? And these are people, individuals है तो क्या मतलब कौन होंगे? Maybe suppose say All India Gaming Federation का head can be one of the part of the SROs. Will it also be suppose a young Virat Kohli is a part of the SRO example? I'm just randomly putting. And then there will be someone in the law also who will be a part. So how Yeah, does the yeah. how are these SROs formed? Firstly, कौन होंगे, Yes. कैसे होंगे? Yeah. So ये कंपनीज एक्ट के अंडर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ फॉर्म होंगे. दैट इज द लीगल वे फॉर देम फॉर्मिंग. 3 इसलिए मीटी ने बोला है बिकॉज फॉर द टाइम बिंग इट थॉट 3 वुड बी गुड, फेयर एंड इनफ, और अगर जरूरत पड़ी तो वो और भी बनाएंगे. सो एसआरओस को सबसे पहले कुछ कंप्लायंसेस दिए गए हैं इस मीटी रूल्स के अंदर. उस मॉडल पे उनको अपना फ्रेमवर्क बनाना होगा. बट SROs है कौन? SROs है कौन? सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज होंगी, वो बॉडीज जो कि मीटी द्वारा वेरीफाइड होंगी, नोटिफाइड होंगी. वो कंपनीज होंगी जिसमें काफी सारे मेंबर्स होंगे, और ये मेंबर्स अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से आएंगे. समझिए, कोई होगा जो कि जिनको गेमिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है, कोई होंगे जो लॉयर्स होंगे,
कोई होंगे जो प्लेयर्स होंगे, या इस तरह के लोग इस बॉडी को कंप्राइज करेंगे और ये कंपनी बनेगी। और ये जो कंपनी बनेगी ये इस गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी। इसमें वो कंप्लायंसेस जो रूल्स में है वो इस रूल्स पे फ्रेमवर्क बनाएंगी कि ऑपरेटर्स को ये करना है, तब हम इस गेम को परमिसिबल बनाएंगे। कि प्लेयर्स के लिए वो क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, प्लेयर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, गेमिंग कंपनीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस हैं। सो ये पूरा फ्रेमवर्क बनेगा। और 3 बस इसलिए बोला गया कि टू बिगिन विद, जरूरत पड़ी तो और भी होगी। और अगेन ये वही बात है कि वेट एंड वॉच, लेट अस सी। क्योंकि अब जितनी भी फेडरेशंस हैं वो अपने आप को इन कंप्लायंसेस में बांधेंगी और फिर अप्लाई करेंगी मीटी के सामने, और फिर जो वेरीफाई हो जाएंगे उनको एसआरओज का बैच दिया जाएगा। तो यू आर टेलिंग मी एसआरओस के बीच में भी कंपटीशन होगा तो कि हु कैन बिकम द 3 एसआरओस, ऐसा भी होगा? It might be because there are compliances around it, and having a sanction from the government of India's department is a big thing. Yeah, so I'm sure Got it. that the government is going to look at it in many ways. Yeah, Perfect. because to become a body under a government rule is a big recognition. Yeah. Absolutely, and you have so much power in such a expensive industry, which is such a revenue making industry. Exactly. So the SRO's concept is such that, example, if poker is taken up or a particular site is taken up, okay, Yeah. does it mean that okay there are 3 SROs and they vote for a particular thing, or is it like कि मैं एक SRO के अंडर आ गया हूँ and now they will monitor me? Any idea on that? Yeah, कैसे होगा? so what the rules are saying is that you have to be a member. A company has to be a member under the SRO. Correct. Right? And now we also know that there are three SROs which are going to be notified. Correct. Now we have to wait and watch that is it going to be, divided under zones, east, west, north, south, or is it going to be, games wise, yeah, or it is going to be, any other criteria which the government might think is fit. Yeah, so we have to wait and watch of what those criterias may be, or it may be that just in 3 different zones of different companies in different areas can approach one easily. That can also be the way. So we have to wait and watch these developments. Got it. There is a lot of clarification also needed, which will come up in time. Yeah. Got it. So we'll come to the time duration, right? Because sometimes things can really go on for very long, right? एक बार the whole layout is done, but जब तक implement हुआ वो time हो सकता है. So अभी फर्क नहीं पड़ेगा because right now what we'll say is the industry is permissible. But how long do you see this entire plan coming into action? कब तक ये हो जाएगा? I see it in 3 months. Oh, wow. Yeah, 3 months the SROs should be formed and verified, and then the memberships would begin. Yeah. Wow. Okay. Nice. Yeah. That's quick. Okay. Nice. Yeah. Okay. KYC details के बारे में बात हुई थी in the Yes. new rules. ये तो सब पोकर कंपनीज ऑलरेडी करती है, तो कुछ अलग है इसमें केवाईसी में? राइट. तो अभी तक केवाईसी तब होती थी जब आप समझिए आप अपना डिपॉजिट पे तो नहीं, विड्रॉल पे होती थी। तो और कोई अगर वेबसाइट पे आके प्ले कर रहा है तो उसको उस समय ही केवाईसी के थ्रू जाना जरूरी नहीं होता था। बट नाउ अंडर दीज रूल्स you have to come and register at the very beginning. So this has led to a little, difficulty, because I understand it is a pain point. क्योंकि आप ही अगर खेलना चाह रहे हो कोई नए वेबसाइट पे और आप उसका फ्री वर्जन चेकआउट करना चाहते हो, तो आई डोंट थिंक आपको उस समय मन करेगा कि पहले मैं अपना केवाईसी कंप्लीट करूं। और बैरियर आ गया। तो इंडस्ट्री ने रखा है गवर्नमेंट के सामने रिक्वेस्ट कि अगर आप इसको दूसरी तरह से थोड़ा मोल्ड कर सको, कि जहां समझिए अप टू 10,000 रुपीज का लिमिट है एक प्लेयर के पास, और वो उसी अमाउंट के साथ खेलना चाहते हो और आप उसको फिर भी वेरीफाई करना चाहते हो, तो आप उसको वो ओटीपी मॉडल पे वेरीफाई कर लीजिए फुल केवाईसी करने के जगह। क्योंकि फुल केवाईसी में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें वो वीडियो कॉल भी इंक्लूड होता है। फुल केवाईसी जो प्रोसीडियर रूल्स है आरबीआई के, पर ये जो पीपीआई मॉडल जिसको बोलते हैं, जिसमें आप 10,000 का थ्रेशोल्ड रखते हैं, पर कोई भी उनका जो गवर्नमेंट आईडी होता है उसके प्रूफ के बेसिस पे उनको वो ओटीपी चला जाता है उनके मोबाइल नंबर पे और वेरीफाई कर दिया जाता है। तो ये रखा गया है इंडस्ट्री द्वारा कि गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे
तो अगर ये मॉडल भी आ जाता है तो बहुत हद तक बहुत सारे प्लेयर्स को आराम हो जाएगा. बट एनीवेज वी वुड लाइक टू से ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस है, मॉडल सेटअप करने पड़ेंगे, प्रोसेसेस सेटअप करने पड़ेंगे, कॉस्ट भी बढ़ता है इंडस्ट्री पे. पर अगर गवर्नमेंट कह रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है. आप देखिए ये सबसे, अगर केवाईसी ऐसे होता है तो मनी लॉन्ड्रिंग कब होता है, साइबर क्राइम्स अगर होते करेक्ट. हैं तो कंपनी इंफॉर्मेशन दे पाती है. ठीक है, अगर किसी भी और तरह का फ्रॉड होता है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा श्योर. टू बिगिन विथ, टू स्टार्ट विथ. तो वी सी दैट देयर आर बोथ साइड्स, द प्रोज एंड द कॉन्स, राइट? So I would say it's not a bad move. It करेक्ट. might just take some time, but yes, we have made a move of request. So again, it's wait and watch. Understood. But yeah, it works like you said both ways because if it's a norm, तो हर एक कोई भी साइड पे आपको खेलना है तो करना ही पड़ेगा. So then the player is bound to do it. But एक barrier है eventually which can be solved. Perfect. Right. Nice. Now MEITY का role in security वहाँ कुछ आता है. Do they do anything in security terms? Because if you're monitoring a rummy website or monitoring a poker website or a fantasy, and you know, because wherever there's some level of money involved and the odds are such that at least in fantasy cricket, like suppose 1 million people take part in this cricket tournament and then you know only the top one who wins a crore is one person. So उसमें ये हो जाता है कि you always have that trust factor कि मुझे नहीं पता कि इनका ही player होगा. You know how you always have कि कहीं भी कोई भी जीतता है, if you are the जो हार जाते हो आप, तो आप सोचते हो नहीं नहीं इनकी टीम का ही होगा, इनकी कंपनी का ही होगा. So does MEITY also look into the security piece? जब आपका compliance और verification होता है तो security checks भी करेंगे कि ये साइट का नहीं सिक्योरिटी भी अच्छा है, यहाँ चीटिंग नहीं होगी लोगों के ऊपर. हाँ, तो देखिए, I'm sure you know this part that every company has a random number generator certification. Sure. They have the responsible gaming policy, right? And they make sure that there is fairness and legitimacy, because it's not only about getting players on board. If you getting them is easy, but you have to retain also. Correct. You just don't have to see customer acquisition, you have to see the retention also. And it was also for the companies to think about their brand value. It's not a one day affair. Companies are thinking in very futuristic manner, because if the company wants to go big, it will have to take care of its player, and to give take care of its player, it have to make sure that there is nothing which may raise questions on the brand, right? Correct. So as long as the question of security is there, and since we are all on digital platforms, every company has their internal IT and admin team. There are servers which are taken care of. And now with the data protection bill coming in, there will be a lot of other check-ins, compliances, which the company will have to take care of, from your data to your servers to cyber security also. So I don't think so. I would say that there is lack of security. And of course, then when you are having rules under the Information and Technology Act, which is purely digital, yeah. Got it. So which will be soon becoming a Digital India Act, which means that we are speaking in terms of cyber security. We are speaking about safe internet. We are speaking about interest of the people at large. So there is no question of not creating trust between the players and the Got it. organization. You should know that these organizations are working very hard day and night to build procedures where the players can trust and go ahead. Got it. Got it. Because है ना ऐसा भी होता है कि the ways to cheat are a lot more than जब तक आप डिफेंड उसको डिफेंड करने के लिए बनाते हो सिक्योरिटी तब तक, because tech is growing so fast, right? So people have like new ways to cheat regularly. So of course sites have to protect their entire brand value with that entire piece. So but there's no central ministry ka interference except the checks which are in place, because now they cannot really get into your business regulations. ठीक है, but yeah. Do they have a say in terms of education? Again, do they look into this कि ministry MEITY does it say कि अच्छा आप लोग को अभी ये तो आप कर ही रहे हो, आप you're enabling a platform to let people play, but education के ऊपर भी आपको ध्यान देना है. Do they have to create your own courses? Is that also a rule जो set up हुआ है? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ हुआ तो था कि
गेमिंग इंडस्ट्री को लेके कुछ तो ऐसा हुआ था, मुझे वो नोटिफिकेशन याद नहीं है, Okay. पर I had heard some speech where they had said that India should be trained in this sector as well. I will not be right. It will not be right for me to comment it because I can't recollect. But ऐसा कुछ नहीं है कि courses होने चाहिए education. But I don't know if you know about this. Is a poker player that IIM Kozhikode में poker as a game used to be taught for Right. skills. Yeah. Correct. So that is a big move. And it has been there for years. So अगर देखा जाए तो एजुकेशन कोर्सेज जरूर होने चाहिए बिकॉज अगर आज के दिन जिस तरह से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है and people if they want to learn about it and make it a professional career, there should be education and courses Understood. around it. It's nothing bad. I don't think anything bad. It will be always leveraging your skills and Sure. upskilling yourself. But I can't recollect of any specific Got notification. it. But if you look at the buzz that has been around this industry, the way the government has supported it, it's a good idea to. It's more like an educate opportunity. people. You're saying it's more like Yeah, an opportunity which industry leaders should look into to create by itself. Like ऐसा कुछ rule नहीं है. absolutely, बढ़िया. absolutely. Fair enough. Done. I have just like I want to talk general stuff right now. India में Yeah. gaming के ऊपर ban आया था, PUBG पे ban आया था, which was again I'm not very sure if you can just enlighten. वो China Yeah. के related था कि वो gaming के game के कारण था. I'm not very aware of the thing. I forgot हाँ, about it. So what तो was the what impact PUBG का बहुत था इंडिया की गेमिंग में. तो right. So what PUBG happened? was PUBG was one game that took over the world. Okay. Correct. And of course the thrill-based game, an action-filled game. So क्या हुआ उसके वजह से जो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम जो हिल रहा था उसके वजह से गवर्नमेंट को ये मूव लेना पड़ा. इसलिए नहीं था कि भाई ये एक पर्टिकुलर कंट्री लेके Oh, आई okay. है तो हमें इसे बैन करना है. Okay. इंडिया में इसका जो इम्पैक्ट था, हाँ, लोगों के लाइफ पे जो इम्पैक्ट आ रहा था उसके कंसर्न में ये बैन था. So that is where the ban comes from. Today the industry, the gaming industry is there, right? And there are mechanisms around it. पर अगर कोई भी चीज जो लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी तो वहां तो हमारे देश के मंत्रालय को सोचना Correct. ही पड़ेगा वेलफेयर के कि ऊपर. भाई Right. हमारे जो लोग हैं उनको हमें सुरक्षित रखना है. Perfect. बस यही कारण था. Got it. My last question is how strong are the lobbies of all the companies? मतलब जो each company has their own legal team, right? तो वो कितना strong होता है? How is that? Like, how does that entire system work? Like they are just waiting because ऐसे because gaming में constantly बहुत सारे ऐसे आज किसी का इशू आया, कल किसी कुछ और केस आया, ये आया. So how does the legal team work? Just general अगर आप बता सके क्या होता है, काम क्या होता है? Thank you for asking this. That is why I fell in love with gaming. It is the most dynamic department in a gaming company because Wow. जैसे जैसे gaming बढ़ रही है वैसे वैसे this department has seen the evolution of gaming. Yeah, there is not a single dull day in this industry, and I would just not say it for the legal department. If you are the HR, if you're in the marketing, if you're in the finance, or if you are the operations department of a gaming company, all are buzzing together because आज समझिए एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस आई तो वो लीगल डिपार्टमेंट पूरी कंपनी को ट्रेन करती है कि अब ये गाइडलाइंस आ गई है और हमें फॉलो करना है. और बहुत बैक एंड फोर्थ होता है बिकॉज मार्केटिंग के लिए वो गाइडलाइंस को अडहेयर करना बहुत डिफिकल्ट होता है. Correct. Yeah, and it's not their fault because they are also thinking about the brand and we are also thinking about the brand from the legal side. So these departments have to come together and work towards legality and marketing at the same time. So I can tell you it is so interesting. It is so dynamic. It is so full of young people. It is full of enthusiasm. It is full of ideas, thoughts, and it just has an upward vision. It is the best industry for the youth of India to look forward. As I said in the beginning, as a lawyer, as a gamer, as a player, as a content creator, everything which is digital, if you're working as a digital, anything related to digital, you should definitely look into gaming. That is what this industry is. And that is why I fell in love with this industry so much that I take my own gaming law workshops. If you feel like you can add this, if you feel like you edit it, that
I want to tell the lawyers at large and the young lawyers that this is one industry they should make a move at, you know, because when the industry grows, it has a lot of power to absorb, and every gaming company will of course need Look, a legal department to for compliances and to deal with law. और अभी इंटरेस्टिंग बात ये है क्योंकि स्टेट लॉज है, तो कोई एक पीस ऑफ लॉ आपको नहीं देखना पड़ता है, आपको हर right, स्टेट का लॉ right, रेफर करना right. पड़ता है। तो बहुत काम है और बहुत सीखने के लिए है। या सो नाइस गेमिंग गेमिंग इन लव विद इट। मुझे एक और क्वेश्चन आ गया आपका याद से सुन के, गेमिंग लॉयर बनने के लिए क्या करना है? मुझे गेमिंग लॉयर बनने के लिए क्या करना होगा? गेमिंग लॉयर बनने के लिए आपको इस इंडस्ट्री को समझना नहीं, पड़ेगा। बट पढ़ाई से या बताइए, पढ़ाई से। पढ़ाई से तो सबसे पहले आप लॉ पढ़िए, ठीक है, करेक्ट। और फिर आज के दिन केवल NUJS वेस्ट बंगाल कैलकाटा में जो है, उसने एक गेमिंग डिपार्टमेंट शुरू किया है जहां वो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे इस ओके। गेमिंग के लिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर gaming will be taught as a subject वाओ। and trained in a law university, and NUJ is one of the most esteemed law universities of India. And तो दिस इज ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है क्योंकि अभी तक गेमिंग पे कोई बुक्स नहीं है, और लोगों को ठीक से अभी भी सब कुछ पता नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि आप इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ें। गेमिंग केवल रियल मनी गेमिंग नहीं है, इसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स भी आता ई है, स्पोर्ट्स भी है। ई स्पोर्ट्स भी आता है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि कसिनोज, स्पोर्ट्स बैटिंग, गैम्बलिंग से ये बहुत डिफरेंट है। तो आप जब इस पे रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, अगर जैसे मैं अपना गेमिंग लॉ वर्कशॉप ले रही हूँ, आप वर्कशॉप्स करेंगे या फिर कहीं भी आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे, तो आपको इसके बारे में बहुत जानने मिलेगा। आप लॉ फर्म्स में जाके इंटर्नशिप कीजिए, आप गवर्नमेंट एजेंसीज के अंडर, जब मेरे मेरे वर्कशॉप में खुद गवर्नमेंट एजेंसीज के लॉ ऑफिसर्स आके कोर्स करके गए, क्योंकि जब वो गेमिंग से डील करते हैं तो उनको भी सब तरह की जानकारी चाहिए, और बुक्स नहीं है तो लोगों को इतना पता नहीं चल रहा है। तो आप जब पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, कोर्सेज करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको समझ आता है, और अंडरस्टैंडिंग फिर ऑफ द आप जाके इंडस्ट्री। कंपनीज में अप्लाई कीजिए। और अगर आप एकदम एक ट्रेनी लेवल से शुरू करते हैं, तो आज के दिन आपको इन कंपनी से बहुत सीखने मिलेगा। आई कैन टेल यू दैट इट हैज contributed so much to my growth. It is not that one day I just fell in love with gaming. The way it has contributed to my career, to my growth, to my learning, and the way I could contribute back, is that what has made me fall in love with gaming laws. And इसकी trajectory only upwards ही है. So it is that gold at the moment which is hidden by some dust. और मैं चिल्ला के बोल रही हूँ या। कि please come be a part of it. This is going to be glorious. Yeah. वाओ। So this is the right time to be in this So industry. if you're a student, if you're someone जो पोकर खेल रहा है बट साथ में कुछ और भी करना चाहता है, and then attend रचना's गेमिंग वर्कशॉप, टॉक टू हर, पहले Thank you. इंडस्ट्री के बारे में बात समझो, एंड देन डिसाइड कि अगर आपको परस्यू करना भी हो, शी विल गाइड यू, आई एम श्योर शी विल। तो वहां से आपका हो सकता है, एंड इन केस यू आर अ कंपनी, देन मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली रीचिंग आउट टू रचना, बिकॉज आई थिंक शी इज गॉट लाइक मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा। तो आपका जो भी इन हर ब्रेन इटसेल्फ, तो जितना वो बता पाएंगे आपको, शी विल प्रॉब्ली कंसल्ट यू. So all of those things can happen, and yep, with the gaming industry growing, I think this is actually gold moment. So Yes. thank you so much, Rachna. Thank Firstly, you. Thank you so much. so many questions जो सब public के पास भी होगी, and we are being able to discuss that, and a lot of edgy questions also, which probably which is inner child जो अपना बताता है question पूछने को, वो सब भी Right. questions पूछ पाए. Thank you so much for giving your time. Thank you so much. Thank you so much, Parth, for having me here. I hope this gives a lot of clarity to people at large to understand of why the world is rejoicing this move, the operators are rejoicing this move. And yes, I'm very open to anybody who wants to consult or to want to learn about this industry, and they can feel free to follow me on LinkedIn and Instagram. And I think once the podcast is out, they will have my details. Perfect. Thank you so much, Rachna.